Welcome, my dear students. So, as a part 2 of the previous video, we are discussing the occupational structure on the eve of Independence Day. So, there are two main important features of India's occupational structure during the British period. 70% to 75% of India's working population was involved with agriculture sector. Agriculture sector is known as the primary sector. So 10% was engaged in the manufacturing sector and almost 15 to 20% people were engaged in the service sector. सो देखो मेजर जो हमारी पॉपुलेशन थी मोर देन 75% की जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में थी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो सिर्फ 10% लोग ही थे. इसके अलावा भी हमारी ग्रोइंग जो रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी. मतलब जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, हम बात करें जैसे नॉर्थ है, नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ द कंट्री वो एग्रेरियन बेस्ड ही थे. जिन एरियाज़ में ब्रिटिशर्स खुद स्टे करते थे, उनकी कॉलोनी थी, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल डिफरेंट था, और जहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी वहाँ पे एग्रीकल्चर का फ्लो था वो डिफरेंट था. So occupational structure, that is the distribution of working people across different industries and sectors, showed very little sign of change during the British rule. So the largest workforce was in agriculture sector, accounting for about 70 to 75% of the working people, and the manufacturing sector had 10%, while the service sector accounted for about 15 to 20% of the working population. So a main feature was the growing regional variation. Areas of the देन मद्रास प्रेसिडेंसी टुडेज, आजकल जिसको हम तमिलनाडु या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला के नाम से जानते हैं, तो जो मद्रास का एरिया था, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल सॉ डिक्लाइन ऑफ द वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर विद अ पैरेलल इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. ये वो एरियाज़ है जहाँ पे आज भी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं और एग्रीकल्चर में पीपल कम इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसे चल रहा था. So during the same time, there was an increase in the workforce in the agriculture sector in Odisha, Rajasthan and Punjab. ये जो एरिया थे उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, उस टाइम भी यहाँ पे एग्रेरियन बेस्ड पीपल थे और आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही हैं. If we talk about the infrastructure, the state of infrastructure facilities, especially in the field of transport, communication and energy, was very poor in India during the British rule in India. However, some efforts were made to develop the basic infrastructures like roads, railways, port, water transport and posts by the Britishers. But the British rulers introduced railways in 1850. This was a great achievement in Indian infrastructure, and Indian railways began operation in 1853. The development and the construction of railways by the British ruler had affected the Indian economy in the various ways. So it provided cheap and rapid transport system, especially for the distant travel. जो रेलवे सिस्टम था, इसने रैपिड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी ताकि डिस्टेंस प्लेसेस पे बच्चों जो पीपल हैं उनको मूव किया जा सके. इट ब्रोक many geographical barriers and thus promoted national unity and understandings. So it also created new employment opportunities for many people. So it helped in controlling famines. जहाँ पे कुछ नेशनल ट्रेजिडीज़ आती थी तो वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर वाले एरिया से लोगों को मूवमेंट करने में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ने काफ़ी हेल्प करी. सो इट प्रमोटेड फॉरेन ट्रेड बट बेनिफिटेड ब्रिटिश ओनली. सो इट encouraged the process of industrialization. So the main reason of British rulers behind the beginning of railway in India was to have effective control and administration over the vast country. And in view of this, Britishers tried to link important administrative and military centers through the railways. So thank you very much.